Welcome to online class, computer science subject, class 11th, chapter 1. In this chapter, we will learn what are the computer basics of the computer and what are the computer fundamentals, in which we will learn the history of computer, generations of computer, functions of computer, a block diagram, and brief discussion of components of a computer system, which include input devices, output devices, CPU, and memory unit. So first of all, what is a computer? Computer is an electronic device. That means it runs on power. So what is the basic function of the computer? The basic function of the computer is to take input in different forms. Then process it, and finally give output. The output should be desired output, not an undesired output. Then we say the computer system is working normally. So it is a device which takes input, processes that input, and produces desired output. So let us start with history of computers. The history starts with the invention of abacus. It was in 5000 BC. That is 7000 years from today. So what was this abacus used for? It was mainly used for mathematical calculations. And the country which used this abacus first was China. And it is still popular in China and other countries. The second thing was Napier booms. It was a device. John Napier in 1617 invented it. It was used for multiplication and division of numbers. Then the third device in the list was Pascaline. Blaise Pascal invented it. In 1642.
In 1694, another mathematician whose name was Leibniz improved पास्कल लाइन, यानी कि जो उसने काम किया था पास्कल ने, उसको उस पर इम्प्रूवमेंट दे दी, उस पर और काम किया, उसको इम्प्रोवाइज मशीन बनाई। और ये अब मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकता, वाज परफॉर्म्ड। नाउ then started the period when it was a revolution in the development of computer. It was Charles Babbage, whom you know is called as father of computers. In 1821, he designed a machine called as differential engine for mathematical calculations. Then in 1834, Babbage again designed an engine which was known as analytical engine. Analytical engine. Ada was an assistant working with Babbage. She gave the idea that computer can be given instructions. This became the first step towards computer programming, and she wrote the first computer program. So who wrote the first computer program? The Charles Babbage's assistant, whose name was Lady Ada Augusta, is also known as the first computer programmer of the world. So these are the stages where this computer came in existence. So it started 7,000 years before, and it was the Charles Babbage who gave the concept of analytical engine, and it was Lady Augusta who said that computer can be given instructions and we can work with the computer like we give instructions to a human being, and the computer will understand those instructions and perform the required tasks for us. Then in the generations of computer, what we see, कंप्यूटर जनरेशन में हम ये देखते हैं कि पहली जनरेशन में कौन सा जो इक्विपमेंट होता था, कौन से डिवाइसेस जो होते थे, किन चीज़ों से कंप्यूटर बना होता था,
उन्हीं को हम जनरेशन्स में तकसीम करते हैं एक पीरियड के हिसाब से। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो स्टार्ट हो गई 1940 से 1956 तक। तो इस जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब्स। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे बहुत ही बड़े होते थे। देन स्टार्टेड द सेकंड जनरेशन, इट वाज फ्रॉम 1956 से लेके 1963 तक। इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स ने। तो हमारे कंप्यूटर का साइज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक एक कंप्यूटर होता था थोड़ा सा कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया। देन उसके बाद जनरेशन थर्ड आ गई कंप्यूटरों की 1964 से लेके 1971 तक। इसमें ट्रांजिस्टरों को रिप्लेस किया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे हमारी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं उनमें आईसीज लगी होती हैं। तो आईसी की वजह से कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हो गया। देन द जनरेशन स्टार्टेड फोर्थ वन फ्रॉम 1972 और ये अभी तक जारी है। ये टेक्नोलॉजी हम अभी तक यूज़ करें। उसमें क्या हुआ, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, एक तो स्पीड बढ़ाई और साइज भी बहुत ही छोटा है। साइज एंड स्पीड, साइज एंड स्पीड के लिए माना जाता है। और जो प्रेजेंट का ज़माना है इसको हम फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, ये अभी चल रहा है प्रेजेंट। इसमें क्या है, इसमें अब ये ध्यान दिया जाता है कि कंप्यूटर को हम इतना इंटेलिजेंट बनाएं कि ये हमारी तरह सीखे और हमारी तरह भी काम करे। तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग मशीन और आर्टिफिशियल लर्निंग मशीन है। यहाँ पे लर्निंग मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें रोबोटिक्स आता है। रोबोटिक्स एक बड़ा ही ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ जो है वो हम इसकी मदद से उसको हम यूज़ करते हैं। सो दिस वाज अबाउट जनरेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट डिवाइसेस और फंक्शंस के बारे में बताएंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हैप्पी।